A very warm welcome, dear students. So this is your second session of Apki Baar Paar, and today we are going to revise differential equations. Differential equations has its importance in terms of its connectivity to physics. A lot of physics revolves around your solving differential equations. Other than that, in mathematics also, this is one area where your entire understanding of integration comes into picture. So this is a very interesting chapter, and straight away let us start with differential equation. So what are differential equations? As the name suggests, जिसमें कुछ वेरिएबल्स होते हैं, independent variables, dependent variables, constants, parameters, arbitrary constants. More importantly, those contain derivatives of independent variables, that is called differential equation. So जिसमें भी dy by dx, d square y by dx square ऐसे चीजें दिख जाते हैं, wherever you can see dy by dx or d square y by dx square, so on, derivatives of dependent variable with respect to independent variable, all such equations involving these things is called a differential equation. Very simple definition. X dy by dx is equal to y. This is a differential equation because dy by dx is present. Sorry, we are looking at order of differential equation before getting into degree. If you look at this first one, d square y by dx square is the second order differential, that is the highest one. So order of this differential equation is 2. If you look at this, there is dy by dx and d square y by dx square. Highest order differential coefficient is 2. So order of the differential equation is also 2. Here again, highest order differential coefficient is 2. dy by dx है, order 1 है, d square y by dx square है, order 2 है, तो this will be 2 again. So order is very simple. Now we have to come to degree of differential equations. Degree of differential equation. So degree of differential equations comes into picture. Degree of differential equations comes into picture only when all the differential coefficients, remember all the differential coefficients should be expressed in a polynomial form. This is very important, should be expressed in a polynomial form. All the differential coefficients, I am only talking about differential coefficients. Some people confuse that. Rest everything should also be in polynomial form. No, only the differential coefficients, and all of the differential coefficients should be in polynomial form. They should be in polynomial form. So you cannot have sin dy by dx, or you cannot have cos dy by dx, or you cannot have e power dy by dx in the equation. So whatever it is, you have to first convert it into a polynomial form. So sometimes it is possible to convert it into a polynomial form. For example, here, is it a polynomial form? No, it's a irrational form. Why? Because the power is 1 by 4. अब करें क्या इसको? Raise to the power 4 on both sides. Raise to the power 4 on both sides. So d square y by dx square whole power 4 is equal to y plus dy by dx whole power 6. अब हो गया ये polynomial form में convert. This irrational part, by raising power 4, I could convert it into a polynomial form. Now, what you need to do is look at the highest order differential coefficient. Don't bother about the remaining things. Look at only highest order differential coefficient. So in the first equation, which is the highest order differential coefficient? Second order differential coefficient. Now second order differential coefficient, whatever highest power is there in the equation, मान लो यहाँ पे एक ही टर्म है तो यही हाईएस्ट होगा, इसके साथ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी होता
तो पावर उसका 1 है, इसका 4 है, तो हाईएस्ट वुड स्टिल बी 4. सो व्हाट इज डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन? इट इज 4. सो व्हाट इज डिग्री? It is highest power of highest order differential coefficient. It is highest power of highest order differential coefficient when expressed in a polynomial form with respect to all the differential coefficients. Okay, so first and the foremost thing what you need to do, express in the form of polynomial in terms of all the differential coefficients. Express it in a polynomial form of all the differential coefficients. Sorry children, extremely sorry for all these technical glitches. Usually it doesn't happen, but somehow it's happening today. Sorry, extremely sorry for that. So now I will ensure everything will go smooth. So what we are doing, we are finding order and degree of this differential equation. We are finding order and degree of this differential equation, second one. To find order, it is clear, this is second order differential equation. Second order differential equation, because highest order is 2. To find the degree, I have to express things in polynomial form of differential coefficients. So what I need to do, first take log. First take log. Log y will be equal to dy by dx plus d square y by dx square. Now, is it in polynomial form of all differential coefficients? Yes. Is there a problem if there is log y? Absolutely no problem, because differential coefficient should be in polynomial form. X and y, even if they are not in polynomial form, it will happily be still considered as a polynomial equation in terms of all the differential coefficients. So this is in polynomial form of all differential coefficients. So इसमें highest order का highest power देखना है. Highest order कौन सा है? d square y by dx square. इसका highest power कितना होगा? 1. एक ही power है, that is 1. So this is of degree 1. And what is the order? 2. Let's look at next one. We need to again convert this into polynomial of differential coefficients. So what is the order of this differential equation? 2. Highest order differential coefficient is 2. Highest order differential coefficient is 2. So d square y by dx square is there, order is 2. Now to say degree of this differential equation, I have to first convert into polynomial form. क्या ये already polynomial form में है? नहीं है, because dy by dx is in terms of sin. अब इसको निकालने की कोशिश करता हूं. How can I remove this? साइन इस तरफ ले जाके, लेकिन अगर साइन इस तरफ ले जाता हूं तो डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर इज इनसाइड साइन इनवर्स,
Again, this is not a polynomial form. So can I ever express this as a polynomial in all differential coefficients? No, we cannot express it. So in such cases, we say degree is not defined. So this is a polynomial differential equation of order 2, but degree undefined. Okay, so degree can be undefined whenever you are not able to express it as a polynomial in terms of all the differential coefficients. Next question, what is the order and degree of this differential equation? यहाँ पे सब कुछ polynomial में है क्या? नहीं है. हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कितना है? डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब. तो ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3. तो ऑर्डर 1 नहीं है, ऑर्डर 1 नहीं है, ऑर्डर 3 है. सो बेस्ड ऑन द डिग्री यू विल बी एबल टू चूज ऑप्शन बी और ऑप्शन सी. नाउ डिग्री के लिए फर्स्ट आई हैव टू एक्सप्रेस इट एज पॉलिनोमियल. व्हाट विल इट बी? डी वाई बाई डी एक्स होल पावर 2/3 है. You have to remove the 2/3. For that, what I have to do? Cube on both sides. Cube on both sides. So 4 d cube y by dx is cube whole cube. 4 d cube y by dx is cube whole cube. ठीक है. Now it is in polynomial form. Highest order differential coefficient का highest power कितना है? ये की power है again. That is 3. So, order is 3, degree is also 3. Is that clear? This is how you find order and degree of differential coefficients. Okay, so formation of a differential coefficient. Basically, you get a differential coefficient equation when there are some arbitrary constants. There are some arbitrary constants in an equation. So what we need to do to evaluate find a differential equation? First, identify all the essential arbitrary constants. Identify the number of essential arbitrary constants. ये essential arbitrary constants क्या होता है? I'll show you in next numerical. ठीक है? Then once you identify essential number of arbitrary constants, the number of essential arbitrary constants will be equal to order of the differential equation. So order of the differential equation will be same as the number of essential arbitrary constants in the given equation. ठीक है? So how to form a differential equation? Because the order is same as the number of essential arbitrary constants, differentiate as many times as the order. ठीक है. अगर ऑर्डर 3 है तो 3 बार गिवन इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना होगा. देन यू विल हैव 3 इक्वेशंस एंड 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स टू एलिमिनेट. हैप्पीली यू कैन एलिमिनेट. ठीक है. एलिमिनेट द आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स फ्रॉम द इक्वेशन एंड यूजिंग ऑल द differential equations which you have formed by differentiating. So let us understand what are essential arbitrary constants. इसमें देखा जाए तो C1, C2, C3, C4, C5 5 arbitrary constant दिख रहे हैं, बट फालतू में है कुछ. ये C1 plus C2 को मैं एक C लिख सकता हूं. अननेसेसरली C1 plus C2 लिखा हुआ है. ठीक है. That together it is one differential, one arbitrary constant. So you can write it as simply C. C cos x plus C3 minus, अब C4 यहां पे है e power x plus C5 है. Now can I write it as C4 into e power C5 into e power x? e power x plus C5 को यहां पे लेके. So together can I see this as a single arbitrary constant? Let's say k. ये पूरा एक arbitrary constant है. Yes or no? So effectively how many arbitrary constants are there? C1 plus C2 is contributing to one arbitrary constant. C3 is contributing to second arbitrary constant. C4 into e power C5 is contributing through third
कांस्टेंट. सो कितने इफेक्टिवली कितने हैं? एसेंशियल और ओनली 3, बाकी दोनों फालतू में दिए हुए हैं. सो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस? इट विल बी 3. It will not be 5, it will not be 4, it will be 3. Order is 3. That is how you find essential number of arbitrary constants. Next, once you know that, how to form a differential equation. Sometimes equation will be given, we will do those numericals, and sometimes some word questions will be given. Form differential equation of family of straight lines passing through origin. Simplest of all questions could be this. Form differential equation of family of straight lines passing through origin. How will you write family of straight lines passing through origin? Y is equal to mx. Y is equal to mx. जनरल इक्वेशन ऐसे भी लिख सकते थे, ax plus by plus c equal to 0, but because it is passing through origin, ax plus by is equal to 0. Yes or no? तो कोई बोल सकता है कि यहाँ पे दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा? नहीं, क्योंकि ए बी में से दोनों में से कोई एक तो नॉन जीरो होगा. यू कैन डिवाइड बाय दैट नंबर. लेट्स से ए इज नॉन जीरो, यू कैन सी इट एज ए प्लस बी बाई ए वाई. अब बी बाई ए टुगेदर इज वन essential arbitrary constant. So there is only one essential arbitrary constant here, and order of this differential equation will be 1. Order will be 1. Is that okay? Now my target is not to find the order, but to form the differential equation. So formation of differential equation, because there is one arbitrary constant, I have to differentiate it once. dy by dx is equal to m. M is equal to dy by dx. Now using these two equations, I have to eliminate m. I have to eliminate all the arbitrary constants. So how to eliminate m? बस m is known to us dy by dx. यहाँ पे substitute कर दो. Y is equal to dy by dx into x. That will be your differential equation. So we have formed the differential equation. Very simple question. You cannot expect such simple questions in your JEE main. So this is just a warm-up question. Let's move on. Yes, this kind of questions can be expected in main. Form a differential equation of family of circles touching x-axis at origin. Touching x-axis at origin and center on y-axis. And center on y-axis. ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है. If a circle is there touching x-axis at origin, तो सर्किल कैसे होगा? मे बी समवट दिस वे. और कोई पॉसिबिलिटी है? Now all these circles will automatically have center on y-axis. ये बोलने की जरूरत ही नहीं है. Whichever circle is touching x-axis at origin, automatically center of that will be on y-axis. ठीक है? So question would have been sufficient even if he said touching x-axis at origin. What will be order of this differential equation? For that you need to know how many arbitrary constants are there. ठीक है? How many arbitrary constants are there? So इसको एक बार properly शिद्दत से कर देते हैं. उसके बाद I will tell you theoretically how to identify order of differential equations in such cases, geometrical cases. ठीक है? So एक बार routine method में करता हूं. सेंटर क्या होगा? वाई एक्सिस में होगा. a, 0. सेंटर अगर a, 0 है तो रेडियस कितना होगा? ये. सो व्हाट विल बी इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल? x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, और सिंपली x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर minus 2ax is equal to 0. Now how to form the differential equation? There is only one arbitrary constant a, so differentiate it once. 2x plus y dash dy by dx को y dash लिख रहा हूँ, minus 2a is equal to 0. From here you get the value of 2a or a. So just replace it. From this you put the value of 2a here. What will be the differential equation? X square plus y square. 2a is how much?
2x plus 2y dash into x is equal to 0. This will be your differential equation. This will be your differential equation. As simple as that. अब इसको थोड़ा अच्छे से भी कर सकते थे. कैसे? Whenever you see this equation of a circle touching a given line, L is equal to 0 at a point x1 comma y1, go to the concept of family of circles. It is a very, very, very important question. Regularly you get it in your JEE main as well as in advanced. Find equation of a circle touching a line, given line, x axis भी हो सकता है, y axis भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, at a given point. How will you assume that equation? Assume that point as point circle. X minus x1 whole square plus y minus y1 whole square is equal to 0. And this line L as your radical axis. Lambda L is equal to 0. This is how you assume the circle equation. So, how many arbitrary constants are there? There is only one arbitrary constant L, lambda. L is your given line, x1, y1 is your given point. So, there is only one arbitrary constant L. ठीक है? So, ये कोई भी equation होता x axis की जगह, any given line equation, equation of circle touching that line equation at any given point on it, it will have how many arbitrary constants? Only one. So, order of the differential equation will be 1. So, let us come back to this question. In this case, point is simple, x square plus y square. Point is origin. So, what is that point circle? X square plus y square is equal to 0. And what is the line? X axis. X axis is y is equal to 0. So, x square plus y square plus lambda y is equal to 0 is how you can write the equation. देखो यहाँ पे भी वही आया था, x square plus y square plus some constant it is x is equal to 0. Sorry. Acha, this point is on y axis, so this is 0 comma a, not a comma 0. It is 0 comma a. This is 0. This is a. Okay, ठीक है, change हो जाएगा. So it will be in the form x square plus y square plus lambda y is equal to 0. Now, how to get equation of the differential equation of this curve? Because there is one arbitrary constant, I have to differentiate it once. 2x plus 2y, y dash plus lambda y dash is equal to 0. From here, what will be your y dash? Y dash will be equal to minus 2x. 2x को इस तरफ लेके गया, y dash कॉमन ले लिया तो क्या मिला? Lambda by 2y. Sorry, I need to find the value of lambda. I need to find the value of lambda from here. Lambda will be how much? ये पूरा equation को इस तरफ लेके जाओ. Lambda को छोड़ के बाकी सब इस तरफ लेके आओ. Minus of 2x plus 2y y dash divided by y dash. That will be the value of your lambda. Now take this value of lambda and substitute here, you have your differential equation. Substitute it here, you have your differential equation. So this is how you can form a differential equation of family of all the circles touching x axis at origin. X square plus y square plus lambda is how much? Minus of 2 into x plus y dash divided by y dash. थोड़ा इधर उधर कर दो तो properly answer आ जाएगा. Similar question, find equation of differential equation of the following family of curves. First ये वाला कर देते हैं. Circles touching the given parallel lines, y is equal to a, y is equal to a will be a line parallel to x axis and y is equal to minus a. Let's say these are your lines. Now how will be a circle touching this? What will be the order of this? X coordinate of center अगर पता लग गया तो automatically y coordinate of center आ जाएगा. Yes or no? Center will be on the line exactly in between these two. What is the line exactly in between these two? Y is equal to 0.
y is equal to 0. So center will be on x-axis. Center will be on x-axis. So this will be a comma 0. Sorry, some lambda comma 0. Let the center be lambda comma 0. रेडियस कितना है? ये दोनों लाइंस के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? ये भी ये है. So what will be the equation of the circle? X minus lambda whole square plus y square is equal to a square. So how many arbitrary constants are there here? There is only one arbitrary constant, lambda. There is only one arbitrary constant, lambda. तो इसको differentiate कर दो. What will you get? 2 into x minus lambda plus 2y dash is equal to 0. From here you will get x minus lambda. कितना आ जाएगा? 2 कैंसिल हो रहा है, उस तरफ लेके आओ, माइनस y डैश. बस ये ले जाके वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो. x minus lambda is how much? Minus of y dash. So what will be the differential equation? Y dash whole square plus y square is equal to a square. This will be our differential equation. Very simple, right? Are we ready for the next one? X square y is equal to a e power x. How many arbitrary constants are there here? There is only one, a. So our target should be to differentiate it once and eliminate a. So let me differentiate this ones. इसका derivative क्या आएगा? UV rule से differentiate करो. 2x y plus x square y dash is equal to a e power, its derivative is a e power x itself. So my target is to remove a. That means a e power x value you can happily substitute it here. So what is the differential equation which you will get? 2xy plus x square y dash is equal to x square y. बस हो गया काम. This is your differential equation. It is a first order differential equation. Okay. So this is how you can form differential equations by eliminating the arbitrary constants. तो इसमें कितना दिया हुआ है? There is only one arbitrary constant. So let me get rid of that 2y dash. Let me differentiate it once. 2y dash is equal to, what is the derivative of right hand side? 4a. ठीक है. Already you know a value. How much is it? y dash by 2. तो इसको ले जाओ और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो. What will be our differential equation? Y square is equal to 4a is 2y dash. So x plus a is y dash by 2. Your differential equation is ready. Simple सा questions होते हैं. Formation of differential equation वाला complicated भी आराम से दिया जा सकता है, लेकिन देते नहीं है. ओके. सो फॉर्मेशन तो देख लिए हम, ऑर्डर देख लिए, डिग्री देख लिए, हाउ टू फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन देख लिए, हाउ टू फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन इट सॉल्यूशन और गिवन ए इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स और ज्योमेट्रिकल कंडीशंस वो देख लिए. लास्ट में वो ज्योमेट्रिकल कंडीशंस का मैं एक बढ़िया तरीका बताता हूं विच विल बी एबल टू हेल्प यू इन एडवांस लेवल क्वेश्चंस. सो कमिंग बैक टू सॉल्विंग ए डिफरेंशियल इक्वेशन, हाउ टू सॉल्व ए डिफरेंशियल इक्वेशन. Lot of varieties of ways will be there to solve a differential equation. ये तो infinite है, वो ocean है. लेकिन good news is our syllabus is limited to first order, first degree differential equations. ठीक है. हमारा syllabus में क्या पूछा जाता है? First order, first degree differential equations. इसके आगे नहीं बढ़ते. तो वो infinitely many questions जो है थोड़ा limited हो जाते. So that is where हमारे questions type को अगर if I segregate, then solving a differential equation will have involve two types of solutions. One is the general solution. General solution क्या होता है? जिसमें वो arbitrary constant आ जाता है. Let's say y is equal to mx is the solution, or y is equal to x plus c is the solution, or e power x is equal to e power xy plus c is the solution. All such solutions are called general solutions. ठीक है. इसमें एक condition दिया हुआ है कि all these curves pass through 0, 1.
Using that information, you will be able to find a particular value of C or values of C. Such solutions, they are called particular solutions. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में जनरल सॉल्यूशन उसको पूछा जाता था जिसमें n पाई हो, n पाई, ठीक है. Wherever there n is not there, pi by 6, 3 pi by 2, pi by 4, all those solutions were called particular solutions. And wherever you had solutions like n pi plus minus 1 par, n pi by 6, they are all general solutions. तो यहाँ पे भी अगर C, C1 ये सब है तो वो जनरल सोल्यूशन है. उसका वैल्यू निकालने के लिए कुछ कंडीशन दिया हुआ है, giving particular values, then it is a particular solution. So there are a lot of methods for solving differential equations. कुछ type of questions के लिए कुछ methods applicable होते हैं, and you have to be careful about which method is that. It will not be, most of the questions the method will not be clearly visible unless and until you practice. ठीक है. So first is differential equations with variables separable. वेरिएबल सेपरेबल मेथड बोलते हैं सिंपली इसको, जहां पे वेरिएबल सेपरेट किया जा सकता है, सारे वाई टर्म्स एक बार साथ और सारे एक्स टर्म्स एक साथ. वेरेवर यू कैन सेपरेट आउट ऑल द एक्स टर्म्स टुगेदर और ऑल द वाई टर्म्स टुगेदर, दैट इज यू कैन राइट दिस डिफरेंशियल इक्वेशन एज सम फंक्शन ऑफ वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू सम अदर फंक्शन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स. सारे एक्स के टर्म्स एक साथ, सारे वाई के टर्म्स एक साथ हो गया. तो आराम से क्या करोगे, इस तरफ इंटीग्रेट करोगे प्लस सी ऐड कर दोगे, दैट विल बी द सॉल्यूशन. सो यू विल इंटीग्रेट दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, you have a function of y, you can happily integrate it with respect to y, and you will add the arbitrary constant, you have the solution ready. Such type of equations are called variable separable method. ठीक है. सो देखते हैं कुछ वेरिएबल सेपरेबल मेथड्स. ये तो बहुत ही आसान है, देखने से ही पता लग रहा है कि क्या है. व्हाट इज इट, डी वाई बाई, सारे वाई टर्म्स को एक साथ लेके जाना है, सारे एक्स टर्म्स को एक साथ लेके जाना है. वाई टर्म्स क्या हो जाएंगे, 1 प्लस वाई स्क्वायर इधर लेके आओ, 1 प्लस वाई स्क्वायर, डी एक्स इस तरफ लेके आओ, ई पावर एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स. अब इसको सॉल्व करने के लिए आइंस्टीन को पैदा होने की जरूरत ही नहीं है, देख के ही पता चल रहा है. इसका एंटी डेरिवेटिव क्या है, tan इनवर्स वाई. इसका एंटी डेरिवेटिव क्या है, ई पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रल ई पावर एक्स है, प्लस डी एक्स का इंटीग्रल एक्स है. आर्बिट्री कांस्टेंट लिखना भूल ना जाना, डोंट फॉरगेट टू राइट द आर्बिट्री कांस्टेंट. सो दिस विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन. सिंपली ये 1 प्लस वाई स्क्वायर इस तरफ लेके गए, डी एक्स उस तरफ लेके गए, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिए एंड प्लस सी ऐड कर दिए, बस हो गया आंसर. देखते हैं एक और वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन. 1 प्लस, ये उतना सीधा नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो ये भी उतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है वैसे. यहाँ पे dx के साथ एक y का टर्म है, इसको भगाना है. यहाँ से कैसे भगाया जाए, डिवाइड थ्रू आउट बाय y. यहाँ पे dy के साथ x का टर्म है, उसको भी भगाना है वहां से. कैसे, डिवाइड थ्रू आउट बाय x. सो होल थिंग, इफ आई डिवाइड बाय xy, व्हाट विल आई गेट, 1 प्लस x, y by कैंसिल हो रहा है बाय x, dy dx प्लस 1 माइनस y बाई y dy इज इक्वल टू 0. सारे x टर्म्स एक साथ है, सारे y टर्म्स एक साथ है, तो हो गया हमारा. इसको इंटीग्रेट कर दो, इसको इंटीग्रेट कर दो, 0 का इंस्टेंट इंडेफिनिट कांस्टेंट आ गया c. ठीक है, तो इसका इंटीग्रल कितना है, 1 बाई x का इंटीग्रल है ln x और ln mod x टू बी प्रिसाइज. 1 इंटीग्रल इज x प्लस 1 by y, integral is log y, minus 1 is equal to c. This will be the solution of the differential equation. Is that okay? Perfect. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी वेरिएबल सेपरेबल है क्योंकि वी आर डूइंग इट इन द हेडिंग ऑफ वेरिएबल सेपरेबल. अब देखो इसको वेरिएबल्स कैसे सेपरेट किया जा सकता है. ई पावर एक्स डी एक्स के साथ है, अच्छा बच्चा है, लेकिन ये थोड़ा नॉट, ये y के साथ है, इसको भगाना है. यहां से कैसे भगाए, डिवाइड थ्रू आउट बाय 1 प्लस ई पावर 2x. सिमिलरली 1 प्लस वाई स्क्वायर इज विथ dx, इसको भी भगाना है यहाँ पे डिवाइड बाई. तो डिवाइड करेंगे 1 प्लस वाई स्क्वायर से थ्रू आउट, तो यहाँ पे 1 प्लस वाई स्क्वायर आ गया, प्लस डिवाइड करेंगे 1 प्लस ई पावर 2x थ्रू आउट, तो ये यहाँ से हट के ई पावर x बाई 1 प्लस ई पावर 2x dx आ गया.
अब इसको क्या करना है, I divided the equation throughout by 1 plus y square and 1 plus e power 2x. अब इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। क्या इंटीग्रेशन कॉम्प्लिकेटेड है? नहीं, बिल्कुल नहीं, आंसर दिख ही रहा है। ठीक है, आप लोगों के सुविधा के लिए e पावर 2x को e पावर x होल स्क्वायर लिख दिया। अब बताओ आंसर क्या होगा? ये तो देखने से ही पता लग रहा है कि tan इनवर्स y है। ये भी देखने से पता लग रहा है e पावर t, x के जगह t देख रखते हो तो e पावर x dx will be your dt. So this is dt by 1 plus t square tan inverse t, or simply this is tan inverse e power x is equal to c. So answer for this is tan inverse y plus tan inverse e power x is equal to c. होगी बात? वेरी सिंपल। सो इंटीग्रेशन का ही खेल है, डिफरेंशियल इक्वेशंस में इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन का ही खेल है। ऑल ऑफ दोस हु नो indefinite integration properly and differentiation properly can happily do this chapter. This is your differential equation. ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करें? x टर्म्स को एक साथ लेके आना है, y टर्म्स को एक साथ लेके आना है। तो dx x क्यूब dy प्लस xy dx is equal to x square dy plus 2y dx। पहले dx के सारे टर्म्स एक तरफ लेके जाओ, dx इंटू क्या बचा हुआ है यहाँ पे xy, यहाँ पे 2y is equal to dy इंटू यहाँ पे क्या है x स्क्वायर, इस तरफ लेके गया तो x क्यूब। ठीक है, तो y के साथ x को बिल्कुल नहीं छोड़ना है एंड x के साथ y को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, तो y कॉमन आ जाएगा, उस तरफ फेंक दो उसको। dy बाई y इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा हुआ है, y कॉमन लिया तो x माइनस 2 dx एंड इसको यहाँ से डिवाइड कर रहे हैं तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब हो गया। दोनों को इंटीग्रेट कर दो और प्लस सी ऐड कर दो। इसका इंटीग्रल सिंपल है लॉन भाई। अब इसका इंटीग्रल उतना सिंपल नहीं है कि नहीं? कैसे किया जाए इसको? व्हाट इज दिस इंटीग्रेशन? This is x square into 1 minus x, yes or no? x square into 1 minus x। तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, या थोड़ा इसको x minus 1 लिख दो, डिवाइडेड बाय यू हैव x square into 1 minus x dx। x minus 2 आई एम राइटिंग इट एज x minus 1 minus 1। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट में x माइनस वन कैंसिल हो रहा है, यू हैव माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, जिसका इंटीग्रल हमें बचपन से पता है। 1 बाई एक्स इज द एंटी डेरिवेटिव ऑफ माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब बचा है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स। यस और नो? तो इसको क्या करें बताओ? ये पार्ट तो आराम से निकल गया, 1 बाई एक्स। अब इसके लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा है, तो क्या करें? Either if you know the process of partial fractions, you can happily split this into partial fractions. That will be very easy. If you don't know the partial fractions part, then what I will do is I will add x square and subtract x square. I will add x square and subtract x square. ये करके क्या फायदा मिल रहा है? यहाँ पे x minus 1 and x minus 1 कैंसिल हो रहा है। ठीक है, एंड सेकेंड पार्ट में x स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। तो x minus 1 अगर कैंसिल हुआ तो what will you be left with? x plus 1 divided by
एक्स स्क्वेयर विथ ए माइनस साइन लेफ्ट। अब ये काफी सिंपल इंटीग्रल हो गया, -1/x एंड -1/x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ तो 1/1 माइनस एक्स dx। नाउ दिस इज अ वेरी सिंपल इंटीग्रेशन राइट। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है -1/x, सेकंड टर्म क्या है -1/x स्क्वायर, माइनस ऑफ 1/1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव कितना होगा log ऑफ 1 माइनस एक्स। तो सारे एंटी डेरिवेटिव्स पता है, वहां से लेके आके यहाँ पे रख एंड dy by y का एंटी डेरिवेटिव log y plus c, that would be your answer. So this part is little trickish unless and until you know partial fractions. If you know partial fractions, happily you can write this in the form a by x plus b by x square plus c by 1 minus x and find the values of a, b and c. Find the values of a, b and c. That is how you can do it directly, methodically. Okay? Otherwise you have to intuitively find x square से ऐड करना है या x ऐड करना है या 1 सबट्रैक्ट करना है या 2 को अलग कैसे लिखना है, ये सब सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इंटीग्रल a to x, आपके लिए लिख देता हूं आराम से क्वेश्चन, t y of t dt is equal to x square plus y of x, then find y as a function of x. Find y as a function of x. तो इसको पहले इंटीग्रल है एंड हम डिफरेंशियल इक्वेशंस चैप्टर कर रहे हैं, हमें इंटीग्रेशन से कोई मतलब ही नहीं है, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो ताकि इंटीग्रेशन से निकल जाए। हाउ डू यू डिफरेंशिएट इट? न्यूटन लेबनिट्ज थ्योरम। डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट इज 1 इनटू फंक्शनल वैल्यू ऑफ दिस, कितना हो जाएगा x into y of x. Derivative of upper limit is 1 into x into y of x. Minus derivative of lower limit is 0, तो पूरा ही 0 हो गया, तो इसका डेरिवेटिव आ गया ये is equal to, इसका डेरिवेटिव कितना हुआ 2x प्लस इसका डेरिवेटिव कितना हुआ y dash x। ठीक है, तो ये y dash x से हम कंफर्टेबल नहीं है, इसको लिख देते हैं dy by dx। अपना पुराना नोटेशन y dash x को लिख देते हैं dy by dx। इफ यू आर कंफर्टेबल, मोर देन हैप्पी, यू कैन हैप्पीली कंटिन्यू एज इट इज। ठीक है, x इंटू ये टर्म यहां पे लेके आओ y of x minus 1 विच इज सिंपली y minus 2x लेके आओ, तो x कॉमन आ गया तो y minus 2 बचेगा, इज इक्वल टू dy by dx। अब क्या करना है, सारे x टर्म्स को एक साथ और y टर्म्स को एक साथ, सो dy डिवाइडेड बाय y minus 2 इज इक्वल टू x dx। अब इससे आसान इंटीग्रेशन तो नहीं आएगा हमारे पास, dy by y minus 2 इंटीग्रल इज log of y minus 2, x dx इंटीग्रल इज x square by 2, तो हो गया बात खत्म। This is how you can do variable separable method questions. This is how you can do variable separable method questions. ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, ln of y minus 2 is equal to x square by 2 plus c. That will be your answer. ठीक है, now there will be some differential equations which are not variable separable, but with some care, if you see, they can be reduced to variable separable. These are called equations reducible to variable separable form. Equations reducible to variable separable form. इसमें तो काफी सारे फॉर्म्स होते हैं, लेकिन इस स्टेज पे हम डिस्कस करेंगे dy by dx is equal to f of ax plus b. dy by dx is equal to f of ax plus b. तो इसको क्या करना है, dy by dx is equal to x plus y plus 1 whole square। ये क्वेश्चन काफी बार सिमिलर डिफरेंट नंबर्स से सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा गया है। cos of x plus y लेके पूछा जाता है, sin of x plus y लेके पूछा जाता है, sin of x plus 3y लेके पूछा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करें, इसमें क्या करना है, सिंपली ये जो लीनियर फंक्शन है ना, whatever the linear function is there, assume it to be t।
assume it to be t. By assuming, what will you get? Now differentiate throughout with respect to x. Differentiate throughout with respect to x. Derivative of 4x is 4 plus dy by dx. Derivative of 1 is 0 is equal to dt by dx. Okay. Now write everything in terms of t, not y. Write everything in terms of t. dy by dx, what is it? dt by dx minus 4. dt by dx minus 4 is equal to 4x plus y plus 1 whole square, which is nothing but your t square. 4x plus y plus 1 is what? t. So 4x plus y plus 1 whole square is what? t square. तो हो गया खत्म बात. ये 4 को उस तरफ भेज दो. dt by dx is equal to 4 plus t square. काफी आसानी से क्वेश्चन है. 4 plus t square is equal to dx. इसको भी इंटीग्रेट कर दो. सी ऐड करना मत भूलो. 4 plus t square, I brought it here, dx I took it there, plus c. तो ये हो गया 1 by a square plus x square वाला इंटीग्रल 1 by a tan inverse x by a. तो 1 by 2 tan inverse t by 2 is the integral of this is equal to x plus c. अब इसको t को वापस रखना है. t किसी को भी नहीं पता है, हमने अज्यूम किया है, हमारे सिवा किसी को नहीं पता है, सीक्रेट. तो इसको लेके जाके वापस रख दो उधर. तो व्हाट विल बी योर आंसर? tan inverse of 1 by 2 tan inverse of 4x plus y plus 1 by 2 is equal to x plus c. This will be your final answer. Got it? All of you? Any doubt here? Good. आसान से क्वेश्चन है. तो हाँ, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है जेई में. तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो बिल्कुल गलती मत नहीं करना, आराम से कर देना इसको. dy by dx प्लस 1 ऐड कर दो इज इक्वल टू cos ऑफ x प्लस वाई प्लस 1. x प्लस वाई अगर t मान लेते हैं तो dy by dx x प्लस वाई अगर t मान लेते हैं तो 1 प्लस dy by dx विल बी योर dt by dx. यही सोच के 1 ऐड किया था मैंने. dt by dx is equal to cos t plus 1. cos t plus 1. dx इधर लेके आओ 1 plus. So dt by 1 plus cos t is equal to dx. अब इसको इंटीग्रेट करना है. प्लस सी आ गया. पहले वेरिएबल सेपरेबल नहीं था, x y एक साथ जुड़े थे, तो इसको कैसे वेरिएबल सेपरेबल किया? बाय अज्यूमिंग x plus y is equal to t. This became variable separable in terms of t. आंसर आने के बाद फिर x t की जगह x plus y लगा दो. So 1 plus cos t, ये इंटीग्रल कैसे करते हैं? 1 plus cos t को लिखना पड़ता है 2 cos square t by 2. 2 cos square t by 2. So this will become integral. नीचे 2 है तो 1 by 2 आ जाएगा बाहर. डिनोमिनेटर में cos square t by 2 है, तो न्यूमरेटर में ये हो जाएगा secant square t by 2 dt is equal to x plus c. Now what is integral of secant square t by 2 into 1 by 2? Tan t by 2. So this will be tan t. T is what? X plus y by 2 is equal to x plus c. That will be your final answer. Very simple question. ठीक है. एंड रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन. यहाँ पे x प्लस 4y भी होता तो ये ऐसे ही करते. 3x प्लस 4y प्लस 1 होता तो भी ऐसे करते. तो रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन फॉर एनी कॉम्पिटेटिव क्वेश्चंस, तो बी थरो विद दैट फॉर्म. ठीक है. हो गया वेरिएबल सेपरेबल एंड कन्वर्टेबल टू वेरिएबल सेपरेबल. कन्वर्टेबल टू वेरिएबल सेपरेबल में फिर आ जाते हैं वापस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पे. वहां पे भी इफेक्टिवली व्हाट यू डू इज कन्वर्टेबल टू वेरिएबल सेपरेबल. ठीक है. डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ होमोजीनियस फॉर्म. ठीक है. एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, एनसीईआरटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है. जेईई मेन में भी कभी कभी पूछा जाता है. ठीक है. लेकिन इसके लिए रेडी होना तो जरूरी है, मैंडेटरी है. सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड विद होमोजीनियस फॉर्म्स.
होमोजीनियस इक्वेशंस होते क्या है? होमोजीनियस इक्वेशंस वो होते हैं जिनको you can write it as a function of x by y or y by x. If you can write the function as y power n into f of x by y, then that function is called homogeneous function. So what is a homogeneous function? If you have a function f of x comma y, which you can write it as y का power कुछ common लेके y power n into some function of x by y या y by x जो भी हो, ऐसे अगर लिख पा रहे हो, then it is called a homogeneous equation. Then it is called a homogeneous equation. तो क्या ये homogeneous equation है? इसको y by x के टर्म्स में लिख पा रहे हो? डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई x. 2 minus y by x 1 plus y by x. अब ये हो गया your right hand side as a function of y by x. So this is a homogeneous equation. अगर यहाँ पे +1 होता तो नहीं होगा. ठीक है. In all these questions what you do is call y by x is equal to some t or v. So y will be equal to vx. Call I'm going for a substitution y by x is equal to t or v. ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी नाम ले लो, नाम में क्या रखा है. Now differentiate both sides. dy by dx is equal to, यहाँ पे uv रूल लग जाएगा, dv by dx into x plus v into 1. So dy by dx what will it be? x dv by dx plus v. अब substitute कर दो यहाँ पे. dy by dx is x dv by dx plus v is equal to, वो कितना हो जाएगा? 2 minus v by 1 plus v. 2 minus v by 1 plus v. ये v इस तरफ लेके आओ, x dv by dx v इस तरफ लेके गया तो क्या हो जाएगा? 2 माइनस v होगा, एलसीएम ले लो, मुझे दिख रहा है माइनस 2v माइनस v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस v. ठीक है, ब्रिंग दिस v द अदर साइड, तो यहां से जाके यहां पे आ जाएगा माइनस v. एलसीएम ले लो, माइनस v माइनस 2v माइनस v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर. नाउ यू कैन सी इट इज हैप्पीली वेरिएबल सेपरेबल. इज वेरिएबल सेपरेबल. सारे v टर्म्स को एक साथ लेके आओ, 1 प्लस v बाई 2 माइनस 2v माइनस v स्क्वायर dv इज इक्वल टू dx बाई x. आराम से दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो. Right hand side integral is very simple. Left hand side integral, it is in the form linear by quadratic. It is in the form linear by quadratic. Linear by quadratic को कैसे किया जाता है? You can see that linear as some derivative of denominator into some constant plus c. Fortunately यहाँ पे derivative का denominator का derivative कितना है? -2 -2v माइनस टू वी. तो -2 से अगर मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं, ये अगर f ऑफ x है तो ये f डैश x है, ये अगर f ऑफ x है तो ऊपर f डैश x है. सो सिंपली मल्टीप्लाई बाय -2 1 प्लस v डिवाइड बाय 2 माइनस 2v प्लस v स्क्वायर. अगर ये मान लेता हूं, so if you call this t, this will be dt. So for your convenience it was given very easy integral. तो ये कितना हो जाएगा? log of 2 minus 2v मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना होगा, -1/2 आएगा तो -1/2 होगा, माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू log x प्लस c. अब v को रिप्लेस करना होगा y पे x से, तो फाइनल आंसर आ गया. तो फाइनल आंसर व्हाट विल इट बी? -half log 2 minus 2y by x
माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। इसमें काफी कुछ दिमाग लगाने के कुछ भी नहीं है, सारा लेबोरियस प्रोसेस है और कुछ भी नहीं है। एंड वी वर फॉर्चुनेट टू गेट लिटिल इजियर कैलकुलेशंस, अदरवाइज थोड़ा लेंदी हो जाता है। अदर देन दैट नथिंग इज देयर इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, एक और होमोजीनियस क्वेश्चन दिया हुआ है, सिमिलर थिंग। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, dy इस तरफ लेके आओ, dx इस तरफ आ जाएगा। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2xy, वाई स्क्वायर minus x square by 2xy. This is again a homogeneous equation because you can divide throughout by x square and write it as a function of y by x. So you go for y by x is equal to t or y is equal to vx. Y is equal to vx. Y is equal to vx जाने से क्या हो जाएगा, dy by dx will be equal to v plus x dv by dx. So this is v plus x dv by dx is equal to, divide numerator and denominator by x square, this will be v square minus 1 by 2v. ठीक है, अब v को इस तरफ लेके जाओ, ये कितना हो जाएगा, dx by x उस तरफ जाएगा, ये डिनोमिनेटर 2v है यहाँ पे आ जाएगा, वहां का न्यूमरेटर कितना है, v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर इज माइनस v स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस साइन कॉमन लिया तो डिनोमिनेटर इज 1 प्लस वी स्क्वायर। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है, प्लस सी। ठीक है, फॉर्चुनेटली इवन मोर सिंपलर इंटीग्रल, व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ दिस, लॉग ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव ऊपर है, द माइनस साइन इज इक्वल टू log x plus c. Based on the options you can further simplify or leave it as it is. ठीक है, सिमिलर सच क्वेश्चन, इसमें भी खास कुछ नहीं है कि 2x by y स्क्वायर यहाँ पे लेके आओ, dy by dx लिख दो, तो दिस इज अगेन ए होमोजेनियस इक्वेशन, सिमिलर क्वेश्चन, you will get it in a simple way. Now some questions will be there which are convertible to homogeneous, ऐसे देखा जाए तो this is not homogeneous, dy by dx is equal to a1x plus b1y plus c1 by a2x plus b2y plus c2, ये homogeneous नहीं है। तो इन चीजों को कैसे homogeneous बनाना है, dy by dx is equal to x plus 2y minus 3 divided by 2x plus y minus 3। अब इन दोनों स्ट्रेट लाइंस को ये दो इक्वेशंस जो है स्ट्रेट लाइंस है, सॉल्व एंड फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस। अब ये मजेदार स्ट्रेट लाइंस दिए गए हैं, क्या मजेदार है इस स्ट्रेट लाइंस में, देखने से ही पता लग रहा है कि 1,1 पॉइंट जो है ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो कभी कभी ऐसे हो जाता है, देखने से ही पता लग जाता है कि इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1,1 है। अगर देखने से पता नहीं लग रहा है तो सॉल्व करो, बस पहला इक्वेशन से 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर सबट्रैक्ट किया, y का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो x का वैल्यू आ गया, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आराम से। लेकिन ये हम खुश नसीब है कि देखने से ही पता चल रहा है, जस्ट बाय लुकिंग एट इट वी कम टू नो दैट
1 comma 1 is your point of intersection. Now what? Call x as x plus 1, 1 is y x coordinate here, and replace y with y plus 1, 1 is y coordinate here. करने से क्या होगा देखते हैं करके. dy by dx is equal to x is x plus 1 plus 2y is 2y plus 2 minus 3. अब कॉन्स्टेंट्स को देखो, 1 plus 2 minus 3 गायब. नीचे देखो 2 into x is x plus 1, so 2x plus 2, y is y plus 1 minus 3. कांस्टेंट टर्म्स क्या हुआ गायब, खतर. तो सारे कांस्टेंट्स को गायब कर दो. अब ये हो गया होमोजीनियस इक्वेशन. नाउ दिस इज कन्वर्टेड टू होमोजीनियस इक्वेशन. नाउ सेम प्रोसीजर. dx क्या होगा, सब कैपिटल एक्स में लिख रहे हैं, तो dx अभी हम लिखेंगे dx इज सेम एज d कैपिटल एक्स. इसको भी चेंज कर देते हैं. d स्मॉल y इज सेम एज d कैपिटल y. नाउ यू हैव a differential equation in terms of capital Y and capital X, which is homogeneous. So call capital Y by capital X is equal to some V. dy by dx will come out to be V plus x dv by dx. dx कैपिटल होगा. अब सब्स्टिट्यूट कर दो, सॉल्व कर दो. फाइनली जो आंसर आएगा उसमें v को रिप्लेस करो कैपिटल Y by x से, एंड वंस यू गेट द फाइनल आंसर इन टर्म्स ऑफ कैपिटल Y एंड कैपिटल X इज नथिंग बट x minus 1, कैपिटल Y इज नथिंग बट y minus 1. तो सिंपल क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है, जस्ट दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करो एंड गो फॉर ए सब्स्टिट्यूशन. x इज इक्वल टू x प्लस h एंड y इज इक्वल टू y प्लस k, वेयर h कॉमा k इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. सिंपल सी कहानी है. Then comes the most important of all these different forms, linear differential equations. Linear differential equations इसीलिए important है because most of the research whatever we do in future will revolve around linear differential equations. ठीक है? And if you have seen your other subjects also, chemistry, kinetics, you will have linear differential equations. Your radioactivity is a linear differential equation. Your rate measures, okay, they are also linear differential equations. Your thermometry will have linear differential equations. So wherever that rate word is there, rate of change is there, mostly they will be linear differential equations. That is the reason there is lot of theoretical significance to this linear differential equations. There is lot of theoretical significance to linear differential equations, so they are highly probable to be asked. So any equation in the form dy by dx plus p, p is any function of x, p let it be any function of x is into y, y जो है linear में है, इसीलिए linear differential equation बोला जा रहा है. So dy by dx as well as y are linears. p can be any function of x, it could be sine, exponential, log, whatever it is, doesn't matter. q is another function of x, so q is also a function of x, p is also a function of x. If you have the pattern dy by dx plus p into y is equal to q, then such an equation is called a linear differential equation. Same thing dx by dy भी हो सकता है, dx by dy plus p if it is a function of y, q if it is a function of y, then this is again called a linear differential equation. ठीक है? linear differential equation को solve कैसे करते हैं? We multiply throughout by something called integrating factor. What is that integration factor? It is e power integral p dx. is e power integral p dx. जब मल्टीप्लाई करते हो दोनों साइड e power integral p dx से, this left hand side if you observe
this will be derivative of y into e power integral pdf. So इसका इंटीग्रल आ जाएगा y into e power integral pdf. एंड यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं e power integral pdx से, तो राइट हैंड साइड इट विल बी इंटीग्रल ऑफ q into e power integral pdx plus c. This will be the solution. Directly integration factor identify करने से what will be your solution? Y into integration factor is equal to q into integration factor का integral. You will be integrating it again plus c. ठीक है? So what will be the solution? Y into integration factor is equal to integral of q into integration factor plus c. That will be the solution. Similarly, in this case, when you multiply by integration factor in this case will be e power integral p dy. We are integrating with respect to y here. तो ये क्या हो जाएगा? Left hand side if you observe it will be derivative of x into integration factor. इसको डिफरेंशिएट करके देखो वही टर्म आ जाएगा. सो इंटीग्रेट करने से ये आ जाएगा. हियर इट विल बी इंटीग्रल ऑफ q इंटू ई पावर इंटीग्रल पी डी वाई. यहाँ पे भी बाद में एक डी वाई लिख दो जैसे यहाँ पे डी एक्स लिख. ठीक है, आई एम अवॉइडिंग इट जस्ट टू शो सम सिंप्लिसिटी इन इट. ओके, लेट अस सी विद सम एग्जांपल्स. क्या ये लीनियर इक्वेशन है? डी वाई बाई डी एक्स है, वाई है, उसके साथ एक फंक्शन ऑफ एक्स है, राइट हैंड साइड में फंक्शन ऑफ एक्स है. सो हैप्पीली इट इज ए linear differential equation. It is a linear differential equation. What will be your integration factor? E power integral p. P is how much? 1 by 2x. P is coefficient of y here. 1 by 2x dx. 1 by 2x dx. That will be your p. So how much is this? E power integral 1 by 2x is log 2x. Sorry, this will be log x by 2. वन by 2 कॉमन ले लिया. इंटीग्रल ऑफ 1 by x is log mod x. So this will be 1 by 2 log x. ठीक है, 1 by 2 log x को कैसे लिख सकते हैं? log root x. log root x. Log root x, e power log root x will be how much? Root x. E power log root x will be how much? Root x. So integration factor for you is root x. So what will be the solution? Y into integration factor root x is equal to integral of q. Q is this function 3x square into integration factor root x dx plus c. खत्म. This is very simple. Root x is x power half. X power half. So whole thing this will be integral of y root x as it is or y x power half. This is how much? 3 into x power 2 plus 1 by 2 is 5 by 2 dx plus c. Now you can expect a simpler integral. x power 5 by 2 का इंटीग्रल कितना होगा? x power 7 by 2 into 2 by 7. खत्म, लिख दो, हो गया. यहाँ पे क्या करेंगे? सेम थिंग. दिस इज अगेन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. y dy by dx. दिस इज योर p, दिस इज योर q. तो ये कितना हो जाएगा? y into integration factor is how much? if will be integral of e power integral of p dx 2x dx. e power integral of 2x dx which is how much? ये x square हो गया
e power x square. e power x square is your integration factor. वहां पे c लगाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल कभी भी मत लगाओ c इंटीग्रेशन फैक्टर में, लगाने से फर्क नहीं पड़ता लेकिन लगाने की जरूरत नहीं है. ठीक है. y into e power x square will be equal to, what will be the solution? y into if is equal to integral of x cube into e power x square dx, q into if dx. अब इस क्वेश्चन को क्या करें, एक्स स्क्वायर को टी मान लो, y e power x square will be equal to integral of x into x square into e power x square dx. यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, डिवाइड करता हूँ, एक्स स्क्वायर का फंक्शन दिख रहा है, 2x डेरिवेटिव दिख रहा है, तो एक्स स्क्वायर को t मान लो, दिस विल बी t पावर t इंटू डी टी. ठीक है. तो आराम से इसका इंटीग्रल निकाल सकते हो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लेके यू कैन हैप्पीली इंटीग्रेट इट फ्रॉम हियर. so this is how you will evaluate linear differential equations. Now there will be some equations which as such may not be looking like linear differential equations, but छोटा सा ट्विस्ट देने से दिख जाएगा. या जैसे कि यहाँ पे dy by dx sin x से पूरा डिवाइड कर दो, प्लस y इंटू कॉट एक्स इज इक्वल टू x sin x कट गया, 2 sin x cos x. This is again in the form of a linear differential equation, dy by dx plus y into cot x is equal to this thing. इंटीग्रेशन फैक्टर कहाँ क्या होगा यहाँ पे, e पावर इंटीग्रल p cot x dx. ठीक है. log mod sin x आ जाएगा, sin x आ जाएगा, इंटीग्रेशन फैक्टर. परंतु लेकिन बट if you observe this closely, we will do more such things in exact differential equations. If you observe this closely, this is derivative of which function? This is derivative of which function? You can see UV rule here, y है, y का derivative है, sin x है, sin x का derivative है. So left hand side directly you can see it as derivative of y into sin x. ठीक है. जब इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रल 2 sin square x cos x dx as it is, और कुछ करने की जरूरत भी नहीं है. ठीक है. so you will be getting the same equation as it is will be helpful to you. 2 sin square x cos x का इंटीग्रल पता है, sin x if you see it as t, cos x will dx will be your dt. so यहाँ पे 2t square है, whose integral is 2t cube by 3. so what will be your answer? y sin x is equal to 2 sin cube x by 3 plus c. as simple as that. ठीक है. so this is how you solve linear differential equations. This is pretty simple. Let us look at this. This is again not looking like homogeneous, neither looking like linear. तो क्या करें इसको? Just segregate terms. x dy by dx plus 3y square dy by dx is equal to y. Yes or no? Now y में complicated functions है, y में complicated functions है. so x को ऐसे रखेंगे, I'll multiply throughout by dx by dy. so what will it become? y dx by dy is equal to 3y square plus x, 3y square plus x. लेकिन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होना है,
we should not have this y. Should not have this y. So I'll write this as dx by dy, x वाला टर्म भी यहाँ पे होना है, प्लस x इंटू -1/y is equal to 3y square by y is what? 3y. Now you can see this as a linear differential equation, but it is in the form dx by dy plus x into -1/y is equal to 3y. So what will be your integration factor here? E power integral p. P is -1/y dy, which will be e power minus log y, which is log 1/y. E power log 1/y is 1/y itself. 1/y itself. So what you have to do is multiply throughout by, what will be the answer? X into integration factor 1/y is equal to integral of q into, q is what? 3y into your 1/y. y कैंसिल हो जाएगा, काफ़ी आराम से निकल जाएगा. When you know exact differential equations, you can do it even more in a simpler way. बस यहाँ पे थ्रू आउट y से डिवाइड कर दो, इसका डेरिवेटिव आइडेंटिफाई हो जाएगा, यहाँ से आंसर निकल के आ जाएगा. ठीक है. Even by linear also, it is not a complicated question. It's a very simple question. Now, there will be some equations which are not linear, but they are reducible to linear. ठीक है. कुछ सब्स्टिट्यूशन करने से ये लीनियर बन जाएगा, जैसे कि dy by dx प्लस p इंटू वाई है इज इक्वल टू सिर्फ q की जगह देर इज q इंटू वाई पावर n. सो हाउ टू मेक इट अ लीनियर? आई विल डिवाइड थ्रू आउट बाई वाई पावर n. I will divide through out by y power n. When I divide through out by y power n, what will I get? There will be no y power n here. Here I will have 1 by y power n. There was y here, so this will be y power n minus 1. I am dividing throughout by y power n. Now what I get is, to convert this into a linear, I will have to go for substitution. 1 by y power n minus 1 is equal to t. 1 by y power n minus 1 is equal to t. Differentiate it now. This will say t is y power 1 minus n. T is y power 1 minus n. Now differentiate it. Dt by dx will be equal to y power 1 minus n minus 1 minus n into 1 minus n into dy by dx. So, dy by dx. ठीक है. यहाँ पे y पावर माइनस n है, dy by dx ही है, फर्स्ट 1 minus n नहीं है, so I'll multiply throughout by 1 minus n. 1 minus n is a constant, remember. So this whole thing is what? dt by dx plus 1 by y power n minus 1 is what? t into p into n minus 1 minus n. 1 minus is a constant. So this whole thing is a function of x is equal to q into 1 minus n. This is also a constant. This whole thing is a function of x. Now it is looking like a linear in terms of t. dt by dx plus t into p, a function of x into constant, plus q, a function of x into constant. Now this is a linear differential equation. So whenever you have this Bernoulli equation, dy by dx plus p into y is equal to q into y power n, divide throughout by y power n, and it gets converted to a linear. And how to convert it into a linear? Go for the substitution. 1 by y power n minus 1 is equal to t. जैसे कि ये क्वेश्चन में है y square dy by dx minus x minus y cube
Okay, so how is this differential equation? If you compare it with the previous one, dy by dx plus py is equal to qy power n. Dy by dx, y square should not be there. So dy by dx is equal to x by y square plus y. So no. If I bring this side, dy by dx minus y is equal to x by y is there. y तक ठीक था, p is -1 I could understand. x सिर्फ होने तक q of x हो जाता, लेकिन y power -1 है. So what I have to do? Bring this y the other side. Bring this y the other side. Y dy by dx minus y square is equal to x. Is equal to x. Now what you have to do? This y square, put it equal to t. Y square, put it equal to t. 2y dy by dx will be your dt by dx. Here dt by dx. So y dy by dx I can write it as, or I will multiply throughout by 2. 2y dy by dx I can write it as dt by dx minus 2y square is 2t. 2y square is 2t is equal to 2x. This is a simple linear differential equation in terms of t and x. This is a simple linear differential equation in terms of t and x. So happily you can solve, and then once you get it, you can replace x by t. Okay. So this is how you can solve some Bernoulli equations. Some other types of Bernoulli equations will be of the form dy by dx sin y by x is equal to x square. So your q is visible, your p is visible, but in place of v you have sin y, in place of dy by dx it is cos y dy by dx. So very simple, sin y you call it t, let this whole thing be p, function of x, it need not be 1 by x and x square, any function will do p, any function q will do q, plus if sin y is t, cos y dy by dx will be dt by dx. So this is again a linear differential equation for you. This is again a linear differential equation for you. So with some substitutions we can convert a non-linear form also into linear form. Then comes your what kind of substitutions to go, what is that you need to do. The entire crux of your differential equation chapter will lie in this exact differential equations. Okay? Here, make it a habit of learning from left hand side to right hand side. And then recall from right hand side to left hand side. So in question you will have see right hand side, not the left hand side. From right hand side you have to identify that it is left hand side. Like if I see dx plus dy, I should identify that it is derivative of x plus y. If I see x dx plus y dy, x dx plus y dy, I should identify it as derivative of x square by 2 plus y square by 2. If I see y dx plus x dy, y dx plus x dy, I should identify it as derivative of xy, UV rule, derivative of xy. If you see this pattern, y dx minus x dy by y dx minus x dy by y square, you should identify it as derivative of x by y, derivative of x by y. Similarly, if you see y dx plus x dy by xy, y dx plus x dy divided by xy, you should see it as derivative of log xy. Log xy को differentiate करने से क्या आ जाएगा? 1 by xy into derivative of xy is y dx plus x dy. ठीक है, या y dx plus x dy, if you see it as derivative of xy, derivative of x by y, x by y कब आ जाएगा? When you differentiate log xy. ठीक है, that is how you can remember it. These are sufficient. If you ask me,
Rest all are for your practice. I will share this PDF with you. You can practice them, but majorly this will suffice. One more thing which is very important is this one. X dy minus y dx divided by x square plus y square. X dy minus y dx by x square plus y square. Whenever you see this, identify it as derivative of tan inverse y by x. Identify it as derivative of tan inverse y by x. बाकी सब दिख जाते हैं यहाँ पे 2x है 2x dx होता, अगर 2y dy होता तो इसका डेरिवेटिव ये दिख रहा है, तो this is derivative of root over x square plus y square. So what you need is a solid practice on this identifying of the derivatives. इतने आसानी से नहीं आएगा, कम से कम एक 10-20 क्वेश्चन तो लगाना ही पड़ेगा इस पे, ठीक है. Then only you will perfect this segregation, proper segregation. First thing is visualization. ये देख के ये दिखना चाहिए, ये विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करो. तो ऑल दिस 14 फॉर्मूले विल हेल्प यू इन दैट विजुअलाइजेशन. राइट हैंड साइड देख के लेफ्ट हैंड साइड प्रैक्टिस करो, दिमाग में बैठना चाहिए, नॉट ऑन पेन एंड पेपर, दिमाग में बैठना चाहिए कि ये लेफ्ट हैंड साइड दिख के ये दिखना चाहिए तुम्हें, ये राइट हैंड साइड देख के ये दिखना चाहिए तुम्हें, ये राइट हैंड साइड देख के ये दिखना चाहिए. ये प्रैक्टिस जब कर लोगे, in question as it is these things will not be asked, they will be resegregated. अब सेकेंड वाला पार्ट है जो स्किल बेस्ड है, तो रीग्रुप करना है, रीसेग्रीगेट करना है ताकि ये पैटर्न्स दिख जाए. सो ओनली व्हेन यू हैव स्ट्रांग होल्ड ऑफ दिस देन यू विल बी एबल टू रीसेग्रीगेट. देखते हैं इसके क्वेश्चंस कैसे किया जाए, ठीक है. अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर डी वाई. एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स देख के मुझे लग रहा है कि नीचे अगर एक्स स्क्वायर होता तो ये एक्स बाई वाई का डेरिवेटिव होता, लेकिन यहाँ पे वाई स्क्वायर है. तो व्हाट आई विल डू इज आई विल राइट द लेफ्ट हैंड साइड एज वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर, यहाँ पे माइनस डी वाई. बस ये दोनों को पलट दिया, कि वाई स्क्वायर को यहाँ पे लेके आया, सो दैट डेरिवेटिव ऑफ एक्स बाई वाई दिख जाए, डेरिवेटिव ऑफ एक्स बाई वाई दिख जाए. एक्स बाई वाई का आइडिया कैसे आया, ये देख के और ये देख के, अगर वो याद रहता तो ये आराम से आइडिया आ जाता. सो लेफ्ट साइड इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स बाई वाई, राइट हैंड साइड इज माइनस डी वाई. नाउ इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स. सो व्हाट विल इट बी, एक्स बाई वाई इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस सी. एक्स बाई वाई इज इक्वल टू minus y plus c. It's option A as your answer. Very simple. Exam में इतना simple नहीं आता. Maybe something like this will come. 2x square y dy by dx is equal to tan of x square y square, tan of x square y square minus 2xy square. इसका आइडिया निकालने के लिए काफी मेथड्स है. ये हिट एंड ट्रायल कर सकते हो, इसको उधर बेच के उसको इधर बेच के एक बार गेस करते हो कि निकल रहा है कुछ पैटर्न या नहीं निकल रहा है. दिस इज हिट एंड ट्रायल. साइंटिफिकली करना है तो tan of x square y square you cannot get rid of it unless you see derivative of xy somewhere. This will not be easy to handle. So somewhere you should have derivative of x by, or to be even more precise you should have derivative of x square y square. Should have derivative of x square y square. उसके बिना ये क्वेश्चन नहीं निकलेगा. तो examiner would have already ensured that there is derivative of x square y square in the question. Now you have to just sense for it. I'll take this 2x y square there. My hunt is to look at derivative of x square y square. And what is this? What is this on the left hand side? What is derivative of x square y square? 2x into y square, 2x into y square plus x square into 2y dy by dx, x square into 2y dy by dx. So whatever we were searching, this is already there. This is derivative of x square y square. tan को इधर लेके आता हूं, cot x square y square. dx को उधर लेके जाता हूं, so call xy t, x square y square t, you can see cot t dt.
cot t dt, which is log mod sin t, t is x square y square is equal to how much? X plus c. ठीक है. So sin x square y square is equal to e power x plus c. Sin x square y square is equal to e power x plus c. To find the value of c, this is your general solution. To find the value of c, what is given? Y of 1 is root pi by 2. So when x is 1, y will be root pi by 2. Substitute this point here, it should satisfy. 1, y square is pi by 2, sin pi by 2 is 1. So e power 1 plus c is 1. So c should be how much? Minus 1. C should be minus 1. So option A is your answer. Okay? So very simple. Only thing is, with practice only you will be getting these things. Okay? Now, next one looks slightly more complicated. यहाँ पे थोड़ा segregate करके देखो. It is x dx plus y dy divided by y dx minus x dy is equal to x square plus 2y square plus y power 4 by x square. By x square अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे लिख देता हूं. So can you identify numerator? It is x power 4 plus 2x square y square plus y power 4. This is nothing but x square plus y square whole square divided by x square. Now what is this? ये देख के क्या आ रहा है? This is derivative of x square plus y square, of course with 2 by 1 by 2. So this is 1 by 2 derivative of x square plus y square. Whenever you see x square plus y square derivative and x square plus y square here, so pull it out. Whole square. So this part is done. If I call it t, this will be dt. Next, if this part is settled, throw the remaining part out. Y dx minus x dy divided by x square. You will be more than happy to see this. This is derivative of नीचे x square आ रहा है तो वो x नीचे होना चाहिए, y by x. What is derivative of y by x? X dy minus y dx. So एक minus sign लगा दो. This will be derivative of minus of derivative of y by x. So आराम से इंटीग्रेट कर दो, आंसर निकल के आ गया. ठीक है, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स. दिस होल थिंग इज व्हाट? डेरिवेटिव ऑफ minus y by x, derivative of minus y by x plus c. ठीक है, so all your exact differential equation questions will be like this. You have to practice at least another 5 to 10 questions. That will give you solid grip. Let us see one more question on exact differential equation. यहाँ पे e power xy है, e power x by y है. There is e power xy and there is also e power x by y. So automatically you should be able to search for x by y derivative and xy derivative in the question. ठीक है, so e power xy into what is there? xy square dy plus y cube dx is equal to, throw all e power x by y terms other side, e power x by y into y dx e power x by y into x dy minus x. So almost we are done. What is derivative of x by y? Y dx minus x dy by y square. So I should have by y square here. If I divide by y square, what will happen? This will get cancelled. This will become y. Now what is this? E power xy into derivative of xy. What is this? E power x by y into derivative of x by y. इससे आराम से क्वेश्चन निकल ही नहीं सकता. इंटीग्रल इंटीग्रल प्लस c
So what is this? E par t dt, E par t itself, E par xy itself is equal to E par t dt, E par t, E par x by y itself plus c. That will be our final answer. Yes or no? Because I have x by y here, I am seeing the derivative of x by y. Because I have xy here, I am searching for the derivative of xy. So another 10 minutes, we will have one more last important concept and then we will do away with this. So here in this question, actually this is not looking like first order first degree equation, first order first degree equation. This is first order, but degree is 2. Sometimes you will get such questions, but it will be convertible to first order first degree. So I'll square a whole thing by dy by dx whole square. Usually I avoid writing dy by dx. I prefer writing y dash. It's up to you. You can also prefer writing y dash. This is square of this is equal to. Now you can see y square dy by dx whole square gets cancelled. Y square dy by dx whole square gets cancelled. Then you have y square plus you have 2x square here, that makes this 2x square, that makes this 2x square. Then you have 2x square dy by dx whole square. Okay, so effectively what do you have? 2x square dy by dx whole square plus 2xy dy by dx plus two x square dy by dx. I took this the other side, so this will be minus 2xy dy by dx plus y square minus 2x square is equal to 0. Now this is like a quadratic equation. This is like a quadratic equation in terms of dy by dx. Yes or no? So quadratic equations, second order, second degree we cannot solve unless you convert it into first degree equation. So let me find dy by dx from here. Just solve like a quadratic, minus b coefficient of this plus or minus root over b square. B square is what? 4x square y square minus 4 a is 2x square, c is y square minus 2x square, minus b plus or minus root over b square minus 4ac by 2a, by 2 into 2x square is 4x square. Okay, if you look at this looks like a homogeneous equation. This is a homogeneous equation. This is a quadratic, under root will give you a linear, or quadratic in terms of xy, so it will give you a linear in terms of xy. So xy term and denominator x square term. So all you have two second degree terms. So this is a homogeneous equation. So from a second degree equation, I got it converted to first degree equation, and that to homogeneous equation. So y by x is equal to t substitution will give you the answer from here. From here you can solve that using y by x substitution. Then you have this last important concept which is called orthogonal trajectory. It is very simple. Orthogonal, whenever we use the word orthogonal, wherever we use it, orthogonal triad in vectors, three mutually perpendicular vectors are called orthogonal triad. We use it in matrices,
There also some perpendicularity is there. When we discussed matrices, we can discuss. Orthogonal, two lines cut each other orthogonally, lines are perpendicular. Two curves cut each other orthogonally. Angle between the tangents is 90 degrees. So orthogonal trajectory is also same thing. So orthogonal trajectory, to find orthogonal trajectory of a curve, find its differential equation, and in place of dy by dx, replace it by minus dx by dy. What is the significance of dy by dx and minus dx by dy? If dy by dx is slope of tangent, minus dx by dy will be slope of normal or a perpendicular line to it. So dy by dx, if I am replacing it by minus dx by dy, the solution of this new differential equation will be your orthogonal trajectory. So to find a orthogonal trajectory, find the differential equation, replace dy by dx by minus dx by dy and solve, you will get the orthogonal trajectory. Simple question I will give you and I will show you what orthogonal trajectories are. Find orthogonal trajectory of family of lines passing through origin. Family of lines passing through origin, how will they be? Y is equal to mx. Y is equal to mx. Very first question we did. What is the differential equation? Dy by dx is equal to m. Replace m by dy by dx. Put together your differential equation will be what? Y is equal to dy by dx into x. This is the differential equation of your curve. Now to get orthogonal trajectory, what we need to do? Replace dy by dx by minus dx by dy. So orthogonal trajectory will be y is equal to minus dx by dy into x. Now how to solve this curve? Y dy plus x dx is equal to 0. Integrate on both sides. What will you get? Y square by 2 plus x square by 2 is equal to constant, or the 2 I can adjust in the constant. That will be your orthogonal trajectory. This will be your orthogonal trajectory. Now geometrically try to understand this curve. What is this curve? It's a circle whose center is origin. Radius is variable. So this is giving you family of all circles with center at origin. Now what is the original line giving you? Family of all straight lines passing through origin. There could be infinitely many straight lines passing through origin. Yes or no? Now to each of these circles, this line, is it not a normal? Any line passing through the center is a normal. This line is passing through origin and origin is center of the circle. So all these members are normals to the members of this curve. That is what we mean by orthogonal trajectories. Okay. The curves of the first family and the curves of the second family cut each other perpendicularly. They are perpendicular to each other. That is what we mean by orthogonal trajectory. Simple way of finding it. Find the differential equation. Replace. Let us do this question. How to get the differential equation here? Differentiate 2y dy by dx is equal to 4a. So what is the differential equation here? Y square is equal to 4a is 2y dy by dx into x plus a, 5 dy by 2 dx. Y dy by 2 dx is your a. Now you can see when y is getting cancelled. This is the differential equation. Now how to get the orthogonal trajectory? Replace dy by dx by minus dx by dy. So what will be the orthogonal trajectory? Y is equal to minus dx by dy, 2 is also there, into x minus y dx by 2 dy. This will be the orthogonal trajectory. Now we need to solve this.
how to solve this? I'll take dy this side, y dy by dx, dy by dx I am taking it the other side, y dy by dx is equal to minus 2x, or I can write 2x here is equal to minus 2 and 2 gets cancelled, y dx by dy, y dx by dy. Okay, from here if I multiply throughout, this is again looking like a quadratic in terms of dy by dx. So y dy by dx whole square plus 2x dy by dx minus y is equal to 0. This is again a second degree differential equation. So how to do this? Solve the quadratic. Dy by dx is equal to minus b plus or minus root over b square 4x square minus 4ac plus 4y square divided by 2y. This is a homogeneous equation. Put y by x is equal to t and solve and get the results. Okay, this is how you find the orthogonal trajectories. So most important areas which you need to focus on in differential equations is 1. Linear differentiable equations, 2. Exact differential equations, and also do some basic geometric questions. Basic geometric questions I am not touch basing them because that is what you have been doing in your physics, your chemistry, and you will also be doing them through your geometry. Okay, all the very best.